Okay, so hi everyone. My name is Bhavya. The topic I have decided to give a TED talk on is staking cryptocurrency. So basically, what we are going to talk about is not generally staking all the cryptocurrencies. We are going to specifically talk about the staking cryptocurrency, that is Ethereum. So as we all know that Ethereum is getting converted into Ethereum 2.0, which is basically basically an upgrade from the current proof of work model to a more efficient, sustainable, and scalable solution that works on a proof of stake consensus mechanism. So it's a mechanism rather than an algorithm, because an algorithm is something that you have to run on your own. But a mechanism is more dependent upon the interactions and all those things. So earlier, Ethereum 2.0 was thought of being bringing upon as a hard change to what Ethereum was, but for the benefit of the users, it has thought to be brought about in phases. So the first phase is the beacon chain, the second is the merge, and third is the shard chain. So basically, the beacon chain phase is complete, and the merge will be complete before this January 2022. So if you want to stake your stake in this particular proof of stake currency, then you have to do it before that only. So this update has these three phases. So the first phase, that is launch of the beacon chain, has been completed. Then the second phase is that implementation of shard chains. So basically, what shard chains are? Shard chains are used as a way to scale that particular cryptocurrency. So scaling could be done on two layers. One is layer one, that is sharding. The second is layer two, that is roll up. We will talk about that in the future slides. So the phase one and phase 1.5 are expected to be completed in this Jan only, and the phase two, that is the actual rollout, will be done in December 22, I guess. So that's the timeline that we have right now. So basically, what's a proof? Why do we need a proof of anything? So it's basically a reason for economic civil resistance. So what does it mean? That imagine a scenario in which two blocks are being getting added to a particular chain. So there needs to be something that there needs to be a voting game basically, so that which particular transaction gets added to that particular chain. It needs to be there. So providing every person with a single vote won't make sense, because if imagine someone coming with huge resources, and those resources could help him sway that whole process or the whole transaction. So that doesn't seem fair. So there are two particular consensus mechanisms. So one is proof of work, and the other is proof of stake. So in proof of work, you have to prove your work by constantly running hashes on your device for 24/7, and that's one way. And the other is proof of stake. So proof of stake states that you have to uh, you can run as a validator, and your what you say will only be accepted depending upon what stake you have. So if you are on an Ethereum platform, you need to have ether. So that stake defines your stake in that particular situation. So moving, we need to shift from proof of work to proof of stake. There are various reasons for that, because in case of proof of work, the it's very less, it's very energy inefficient. Recent studies, in a recent news, I saw that some of Iran's Bitcoin mining is using energy that is equivalent to one of its nearby cities. So that way, we have to shift to proof of stake, because that doesn't require a lot of energy. And the other is that it lowers the barriers to entry, as you don't need to have a high tech setup to run the hashes. You don't need to have to get it your A6 application integrated circuits created on which you could run it. So these are some reasons. Also, in case of proof of stake, the to find what the issue is and where the issue is, like who is the culprit in this particular chain, like to find the point of fraud, it's easier in it, because there are certain mechanisms like automatic slashing, and there it's basically there's an automatic slashing that helps to pinpoint which particular user was the one that caused a the conflict in the chain. So that way, he or she could be pointed, and those persons coin would be burned. So that's something painful process. So
it's in this way it's better than proof of work. So how does the proof of work works? Proof of stake works. It's like a consensus mechanism. I have already said, and it is being achieved. Uh, so it requires the stake their Ethereum to become a validator in a network. So validators are required for the same thing as miners. Just like yeah. So validators are responsible for the same thing as miners in proof of work, that is ordering the transaction and creating the blocks and adding those blocks to the chain. So this is the main, but the way that this works is different from mining. Here they don't have to prove their computational power that they have, but they just need to have those stakes in that particular cryptocurrency on which on whose platform they are currently working. So the way the validators get rewarded is like the validators get rewarded for proposing new blocks onto the chain, and then attesting or signing the ones that are already there and providing the stake and using the stake so as to make that particular block valid. So that's how the proof of stake works. So another reason that we have to move from proof of work and to proof of stake is that the current network, the transaction speed is very slow. It's around 4.6 transactions per second in blockchain in Bitcoin, and it's around 12 in Ethereum. And just by increasing the number of parameters, like increasing the block size of that particular chain, or by increasing the block time creation, sorry, decreasing that block time creation won't help, because that would only change that transactions to a particular limit, and also including these both things and creating a hybrid structure also won't help, because in that scenario they could be increased to around 200 transactions per second, but still it's very much less than what the current transaction speed on on platforms like Visa is, that is 1700 transactions per second. So that's what I talked about sharding earlier, like how we are thinking about scaling that particular previous proof of work proof of work chain to a greater heights is what you can do is imagine there is a block, and you have 10,000 validators. So you have 10,000 validators, assume that, and rather than rather than those 10,000 validators run their validations on a particular block, and thinking about what other 9,999 would have provided with the actual proof to that, that is just senseless. That doesn't that in that way you be dependent upon others too, that they are validating the block correctly. So rather than just each validator run transactions on that particular block, we just shard it into small blocks. So as you know, sharding is just a basically horizontal scaling of database. So we convert that block into small blocks, and each block is being provided with say 100 validators. So those 100 validators provide you with a particular proof that this block is valid, and that way you don't have to worry about each individual validator running correct validation and providing with a correct result. So there are few ways in which this could take place. Random sampling is there, zero knowledge snarks is there. So these are certain things that could be used to scale that are being used to scale this proof of stake model. So before going to how to earn rewards, let's see how staking rewards works. So basically, it's a sliding scale. So as the number of people increase, as the number of validators, as the number of stakers increase in this scenario, the interest rate decreases. So if you were an initial staker in it, you might have received 23-24% annual return on it. But now, as the amount of stakers has increased, it has reached around 7.3 million. So the interest that you will be receiving is just above 5%. So so that's the thing. If less validators need more interest, also they had to be, and that's completed right now. So it's no point to talk about that. So that's this is the interested equilibrium. So like, what's the perfect number of candidates that, or perfect number of stakers that needs to be there so as to get a decent interest. So let's say so if the
network consists of 10 million validators, then the valid interest rate would be around 5.72%, and that's the sweet spot. So if the number of validators increase, the interest rate decrease, and vice versa. So what, according to me, is that's the sweet spot in this situation. So I have done some calculations. So if someone assume that someone is staking Ethereum, 32 quantity of that particular Ethereum, which in current year at the rate of interest of 5%. So let's say the value, we could scale it, we could check it too. So let's say you have invested stake 32 Ethereum, the value would be around 100,000 $100,000. So considering the Ethereum value to be increasing at a 30% increase every year, which is very much nominal, as you can see in this current situation. The spikes you could see in a current day is 30%. So considering a 30% increase in its value over the next 10 years, you could easily convert your $100,000 to a to almost 2 million. So to scale it down, we could do something. Just a second. So let's say currently I'm staking zero point 0.1 Ethereum. So the current rate of Ethereum is 400 $4,000. So according to it, if I'm regularly investing that amount, or if I let that amount to be stayed for next 10 years, that $415 could convert into $6,000 Hello. easily. Yeah, hello, hello, Hello. hello. Where's my guy? Audible or audible? Audible. Bhavya, you are audible. So this is the scenario ki agar you can invest this much amount. So let's see how you can do these investments. So there are four ways you can stake your Ethereum. So one is the staking pools. This is the easiest one, and this is what we are going to look at. You just need to have an account for it. For running a validator, you have to do a lot of work. You need a minimum investment of 32 Ethereum. That would be crazy amount of money, and you can run it as a validator as service, and you can do also exchange staking. So the best one that I consider is staking pools, because it is being done upon the current exchanges that are there, and I consider it to be a safer option. So let's say we are staking through a staking pool. That's what I said, that you need a 32 ether, and hardware is also required. And also the another thing is, if you are running as a validator, you could face penalties because if you are in a particular block and you might not have run your validator for a particular amount of time, then also there are certain drawbacks to that. You could be penalized for those things. So it's better to stake through a staking pool. So a pool is an intermediary for people that have less than 32 Ethereum. So sorry. So storage is also decentralized, transparent, and is secure. So we are going to look at how we can stake on the Binance portal. So it's a very easy thing to do there. So I just did it a few minutes back. If I could show you. So just a second. You could actually. mm, So the actually I have stated earlier. So you could actually stake your money like from starting from $0.01. So currently I don't have it. I have just staked that amount, but you could do it. And as according to the calculations, that much amount could also turn into a huge amount. If you could increase that amount, you could definitely see the changes. So if you are staking just $41, it could be $600. That's crazy amount of return. So that's what I was saying, that this is just the case with Ethereum that we believe has the potential to grow. Considering about the other altcoins like Polkadot and Matic, those also have a great potential, but and the return they give, it's almost greater than 12 to 12%.
So just using that in those calculations would just give you crazy amount of returns. So that's the thing of staking. Hello. Hello. Yes. Yes. Yeah. So any doubts from anyone regarding it, like how to do it or something, or anyone is interested in know what more things you could do with it? So yeah, how is it different from directly investing in Ethereum, and what's the difference between investing and staking? Basic तो difference क्या है? बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर आप स्टेक कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपको बस उसको जो मार्केट मूवमेंट होगी उससे आपको रिटर्न मिलेगा। बट इफ यू आर स्टेकिंग तो आप अपना जो कॉइन्स हैं वो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और उसकी वजह से वो आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं एनुअली। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है उस पे कि आप उसकी वैल्यू अप्रिशिएट तो होगी होगी। जैसे अगर आप कंसिडर, वही मैं इसमें ये दिखा रहा था कि अगर आप कंसिडर करके चल रहे हो कि उसकी वैल्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में 50,000 पहुंच सकती है, तो उसके हिसाब से मतलब ये भी 10 ईयर्स बहुत लंबा अमाउंट है। हो सकता है कि अभी नेक्स्ट ईयर ही वो 8,000 10,000 पहुंच जाए इथेरियम। तो उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू तो इंक्रीज होगी, बट उसके हिसाब से क्या होगा, आपके पास जो अमाउंट है इथेरियम का वो भी इंक्रीज होगा। तो बेसिकली फाइनेंस पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप इथेरियम बाय करते हो, इथेरियम स्टेक करते हो, तो वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड यू विद बी इथेरियम, बाइनेंस इथेरियम। एंड वो जब भी जैसे अभी जब भी इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 2022 एंड तक, इट्स तो 2022 तक दे सेइंग दैट द प्रोसेस विल बी कंप्लीट, एंड देन आप क्या कर सकते हो, अपना जो बी इथेरियम है उसको आप अपने वापस इथेरियम 2.0 से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बस इसमें एक फॉल बैक है कि आपका 1 साल तक आपका अमाउंट ब्लॉक्ड रहेगा। मतलब आपको ऑल दो उसके अगेंस्ट टोकन्स मिल जाएंगे, बट वो ब्लॉक्ड रहेगा। तो एक ये फॉल बैक है, बट साथ में ये है कि उसकी वैल्यू अप्रिशिएट भी होगी और आपको साथ में इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर अगर आपको बिलीव है कि हाँ ये वैल्यू, मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये इट हैज द पोटेंशियल, इट कुड ग्रो, तो यू कुड डू इट दिस वे एंड यू डिफरेंस कुड फाइनेंस एथेरियम और नॉर्मल वाले में। 2.0 और इथेरियम में। फाइनेंस यस। अच्छा, बी इथेरियम और इसमें। फाइनेंस भी हाँ हाँ। एथेरियम मिलेगा इसमें, तो वो उसमें डिफरेंस क्या है? बी इथेरियम मतलब क्या होता है, यूजुअली अगर आप किसी भी एज अ वैलिडेटर स्टेक करते हो ना, तो आपको कुछ कंफर्मेशन के लिए कुछ कॉइन्स नहीं मिलते। तो आपको एज अ यूजर एक्सपीरियंस बेटर होए, आपको कुछ कंफर्मेशन हो, तो बाइनेंस क्या करता है, आपने जैसे कुछ एक्स अमाउंट स्टेक करा, तो वो उसके अगेंस्ट आपको क्या करेगा, एक्स अमाउंट बी इथेरियम दे देगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस बी इथेरियम के थ्रू आप अलग एक्सचेंजेस के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और जब आप उसको एक्सचेंज करना चाहो, जैसे 1 साल बाद 2022 दिसंबर में आपने कहा कि जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है, और अब आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बी इथेरियम को वापस इथेरियम 2.0 से कन्वर्ट करके 1:1 रेशियो में, जैसे आपके पास अगर 100 इथेरियम थे, 100 इथेरियम आपने स्टेक करे थे, तो आपने 100 इथेरियम स्टेक करे, तो बाइनेंस ने आपको 100 बी इथेरियम रिटर्न कर दिया। तो ओवर 1 ईयर वो 100 के आपके 105 भी इथेरियम हो गए, क्योंकि आपका वो रिटर्न आया, इंटरेस्ट आया उस पर। तो अब क्या होगा, वही 105 बी इथेरियम जब चेन क्रिएट हो जाएगी, आप वापस इथेरियम 2.0 में कन्वर्ट करके उसकी एक्चुअल वैल्यू से ट्रेड कर सकते हो जनरली। बट अभी बाइनेंस ये कह रहा है कि वो मतलब जिस जो बी इथेरियम आपको मिलेगा उसके थ्रू भी आप अलग अलग ट्रेड कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन हो गया और यूएसडीटी वगैरह, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। बट अभी ये कंफर्म नहीं है जो बी इथेरियम मिलेगा वो कैसे यूज कर सकते हो। तो ये स्टेकिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ बाइनेंस के थ्रू कर सकते हैं हम? नहीं, काफी हैं। एक क्या नाम था, रोबोट, एक सेकेंड बताता हूँ। मतलब मल्टीपल मल्टीपल जगह हैं जहाँ से आप कर सकते हो, बट बाइनेंस में अपनी मतलब अगर अपना वो दूंगा पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहाँ मेरे को सेफ लगता है। बाकी ये सारी आपकी स्टेकिंग टूल्स हैं। इंटरेस्ट के वो कर बेसिस सकते पे वॉल्ट पे भी एक फीचर है फिक्स डिपॉजिट का, कि आप लेके उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं, तो उसमें भी कुछ इंटरेस्ट मिलता है। हो। हाँ, वो मतलब एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे 4 तरीके हैं बेसिकली अर्न करने के लिए। जो एक्सचेंज स्टेकिंग होती है ना, वो होती है कि आप वही उसमें भी एक ऑप्शन है सिक्स, लाइक सबका सारे काफी सारे उसमें तो ब्लॉकचेन है, खाली एथेरियम नहीं।
मतलब बिटकॉइन वगैरह पे भी सब पे कोई ना हाँ कोई हाँ हाँ इंटरेस्ट है, किसी पे 6%, किसी पे 8%, सबके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट में डालने के लिए, फिक्स। हाँ, बट वही है, उसमें इश्यू क्या है कि मतलब जो उसके जो करेंसी बैक कर रही है ना उसको, जैसे अगर मतलब उसमें इथेरियम वगैरह जैसी करेंसी मेरे ख्याल से होंगी नहीं, जो हम्म। फिक्स डिपॉजिट वाली हैं, उसमें होंगे ऑल्ट कॉइन्स। तो उनका जो फंडामेंटल है, वो अगर किसी का स्ट्रॉन्ग किसी को लगता है तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बट यहाँ पे मैं एज इथेरियम को मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके फंडामेंटल में बिलीव करता हूँ, और मेरे को मतलब पता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो, तो इसलिए थोड़ा मेरे को इथेरियम वाला सेफ लगता है। नहीं उसमें बाकी अगर आप एथेरियम वगैरह भी है, एथेरियम वगैरह भी है। चलिए, ठीक है वो फिर डिफरेंस देखना पड़ेगा क्या है दोनों में। हम्म, यहाँ पे रॉकेट पूल है, एक रॉकेट पूल पे आप अपना वॉलेट अटैच करके वहां पे इथेरियम ट्रांसफर कर सकते हो। रॉकेट पूल पे इंटरेस्ट रेट जो है ना, ये थोड़ी पुरानी स्टडी है, अभी रिसेंटली मैं वॉलेट कनेक्ट करा नहीं हुआ तो मेरे को दिख जाता कितना इंटरेस्ट है। हम्म। बट रॉकेट पूल मतलब कंसिडर करा जाता है कि अच्छा है स्टेकिंग में। बाइनांस, बट बाइनांस का थोड़ा यूआई वगैरह इजी है। रॉकेट पूल पे जैसे इसमें बी ईथ मिलते हैं ना, वैसे रॉकेट पूल पे आर ईथ मिलता है, तो उनको आप यूज कर सकते हो एज अ सिक्योरिटी टाइप। और बाकी बाकी फंडामेंटली तो यही चीज़ है, बाकी थोड़ा और एक्सप्लोर मैं भी करूंगा, अगर कुछ मेरे को और चीज़ नहीं मिलती है तो उसके बारे में भी फिर शेयर कर दूंगा। यस यस, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। हम्म, मतलब काफी काफी चेंजेस हैं जो मतलब इस वाली चेन में आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी सिर्फ शार्डिंग की बात करी थी ना, हम्म। शार्डिंग के साथ होता है रोलअप्स। रोलअप्स में क्या होता है कि जैसे पॉलीगन है, हम्म। पॉलीगन बेसिकली रोलअप टेक्नोलॉजी, रोलअप पे बेस्ड है। तो यस। ये एक टाइप से स्केल करने का तरीका है। जैसे अभी बिटकॉइन, अगर आप बिटकॉइन जैसी टेक्नोलॉजी को स्केल करना चाहोगे ना, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ वो इंटर इंटर बिटकॉइन रिलेटेड करेंसी में ही आप एक्सचेंज कर पाओगे उसको, मतलब वो स्केल हो जाएगा। वहां पे जैसे दो तीन तरीके होते हैं, एक होता है लाइटनिंग मॉड्यूल, एक होता है बिटकॉइन कैश, ये मतलब उसके स्केल करने के तरीके हैं। बट इनमें क्या है कि जो ट्रांजैक्शन रह जाती है ना, वो सिर्फ इंटरमीडिएट, जैसे बिटकॉइन डिपेंडेंट जो कॉइन्स है, जो बिटकॉइन की साइड चेन्स है, जैसे डॉज कॉइन है, आपका लाइट कॉइन है, और एक और था। तो इनमें ही आप एक्सचेंज कर सकते हो, बट मतलब वो ज्यादा डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाता। तो एक टाइप से पर्पस डिसेंट्रलाइजेशन का खत्म होता है वहाँ पे। तो फिर एक ये है, और मतलब इथेरियम 2.0 में ट्रांजैक्शन स्पीड कुड गो अप टू लाइक 10,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड, जो कि वीजा से भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा है। तो काफी कुछ है। और वो जो जैसे बीकन चेन है, शार्डिंग चेन है, ये दोनों जो इनमें जो क्या कहते हैं उसे, बीकन चेन और शार्डिंग चेन में जो भी कनेक्टिंग है ना, मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी जो पहला स्टेप है उसमें सिर्फ बीकन चेन क्रिएट हुई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपकी शार्डिंग चेन क्रिएट होने के साथ साथ वो बीकन चेन के साथ इंटरेक्ट भी करेगी, मतलब रूट, आप बीकन चेन के अंदर शार्डिंग चेन को रूट कर दोगे ताकि वो फिर ट्रांजैक्शंस फ्लो में काम कर सके। थोड़ा थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग चीज है।